सो हेलो गाइस, ये मेरे चैनल आज क्लास 8 तुम जो चैप्टर 1 थिला पढ़ाई छी बोल से जो माने देखि ना चैप्टर 1 जाई देखि आस परियो ठीक अछि ना। चैप्टर 1 तुम थिला कोन द विट दैट ओन हार्ट्स हम जो यूनिट एबे सब ना जो चेंज हे सब यूनिट वाइज हे छी हला। तो हला विट एंड विजडम हला। विजडम माने तुम ज्ञान रो भरा जो से राज दरबार ऊपर से ऊपर चलिथियो टॉपिक ठीक अछि। तो जो माने चैनल को नवा आस ठीक अछि सब्सक्राइब करो कमेंट करो लाइक करो भूलनी आउ चैप्टर 1 देखि न जाके देखो अवेलेबल अछि आ क्वेश्चन आंसर बहुत रिक्वेस्ट करथिले से फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आनी छी भल से आनी छी देखिया चलो। तो हमर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कोन होइछ बोले देखो जो फर्स्ट जो डिस्कस इन पेयर व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपोर्टेंट इन ए पर्सन। देखिया फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कोन होइछ बोले हला कोन पा इंपोर्टेंट होजी कोन पा इंपोर्टेंट होजी देखियो देखो कमेंट व्हाई आर क्वालिटी लाइक ह्यूमर एंड विट इंपोर्टेंट इन ए पर्सन कोन में इंपोर्टेंट देखो बोले ना ह्यूमर एंड विट मेक ए पर्सन मोर एंजॉयबल एंड एंजॉयबल टू बी अराउंड। से ह्यूमर आ विट कोन मनुष्य माने पर्सन कोन बहुत एंजॉयबल माने कोन तयारी करे दे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस स्ट्रेस ता कमाई बोली कहूची मे कन्वर्सेशन लिवली एंड कैन एज टेंस सिचुएशंस ना से कोन कहूची माने कठिन जो सिचुएशन को से मैनेज कर दे से कहूची ए विटी पर्सन थिंक क्विकली एंड रेस्पोंड जेमती हम चैप्टर पढ़ले के थिला मोर तेनाली रामकृष्ण थिला थिला तो तेनाली रामकृष्ण थिला से विटी पर्सन थिला ता भीतर बहुत ज्ञान थिला। तो विटी पर्सन कैन थिंक क्विकली एंड रेस्पोंड क्लेवरली व्हिच इज यूजफुल फॉर सोशल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन माने से कोन कहूची से माने जल्दी भाबिबो थिंक क्विकली आउ रेस्पोंड क्लेवरली माने बहुत जल्दी रेस्पोंड देबो चालाकी करिगिरी रेस्पोंड देबो ठीक अछि के जने विटी पर्सन मोर विटी पर्सन के थिले बेले एडी देछि नै यूनिट 1 चैप्टर 1 एडी देखा थिबो आप एडी स्थिर अछि तेना रामकृष्ण ये मोर ठीक अछि हमर ये रामकृष्ण तेना रामकृष्ण हो तबरे के सेकंड क्वेश्चन ले कोन अछि सेकंड क्वेश्चन ला व्हाई डू यू थिंक kings and queens prefer to have a witty people among their courtiers ता जो कोर्ट अछि ता दरबार अछि राजा दरबार सेठ तमे कोन बा भाबुचो ना हम राजा और रानी कोन बाय रखिछन भाबुचो लेखा लेखा देखो कोन बाय ना king and queens liked witty courtiers because कोन बाय ना they could entertain them and lighten the mood in serious royal environments जो सीरियस रॉयल एनवायरनमेंट को एंटरटेन करे रखाइतला विटी पीपल आल्सो गेव स्मार्ट एडवाइस इन क्लेवर वे हमर जो विटी पीपल गुडा थिले हला जो संगो अष्ट दिग्गज बिल गां को आउतला जेडी सेन को हितु सबडु क्लेवर के थिला तेनाली रामकृष्ण थिला आउ ताको मारे खाउतला आउ से माने और जो सीरियस माने सामने माने दरबारटा सो सीरियस मुंड रे थिवे सेला को माने एंटरटेनमेंट करिवे आउ से माने बढ़िया क्लेवर माने चालाकी रे बढ़िया एडवाइस भी दियंती solution दियंती sometimes even pointing out mistake without offending the ruler this made them valuable companions ठीक है पिला माने बुझियाला क्वेश्चन आंसर म देखि दे स्क्रीन पे प्रॉपर्ली विजिबल अछि नै बढ़िया प्रॉपर्ली विजिबल अछि रे भल से बुझा पडुछि कमेंट करे भूलनी पिला माने ठीक अछि ता देखो 3 नंबर कोन दोछि ना इफ यू आर asked 3 नंबर दोछि asked to solve disagreement between two people what approach would you take से कोन कहउछि जदी दीटा लोक भितरे से झगड़ा हेछि कोन हेछि तमे केमति सॉल्व करियो से कहउछि हला मु एडे लेखिछि उत्तर ना आई विल फर्स्ट लिसन टू बोथ साइड केयरफुली विदाउट एंटर ने किछि का माने फर्स्ट कथा दि जन को भितरे झगड़ा हे जहा भी हेछि फर्स्ट दि जन कथा में भल से सुनिबि से कहू हला से कहै नै मु कहै छडा हां से कहै ना क्वेश्चन देख तमे तुम ओपिनियन दियो हला आफ्टर दैट आई वुड encourage them calm discussion से कहि दे आई विल ट्राई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रूट प्रॉब्लम माने प्रॉब्लम नो मूलडा तापर भी बुझा के चेष्टा करबी तापरे आफ्टर आई वुड एनकरेज काम डिस्कशन माने शांति रे डिस्कशन में भी सजेस्ट ए फेयर सॉल्यूशन दैट सैटिस्फाइज बोथ as much as possible ओटे फेयर माने कोन ना ठीक उपदेश ओटे देबी जोडा कि जन माने ठीक होतबो आ स्टेइंग न्यूट्रल इन एवरी इंपोर्टेंट माने ता पाई में सेति सपोर्टिव होतो आ पाई में सेति सपोर्टिव होतो सेही सजेशन देले ठीक अछि ता पर तो मोर होछि हैव यू नेवर बीन इन ए सिचुएशन वेयर
small misunderstanding led to a big problem. How was it resolved? से कहूची तमे केबे एंती जिंस अछ छोट छोट मिसअंडरस्टैंडिंग से जिंस बहुत बड़ प्रॉब्लम हेतियो जे केमि सॉल्व करियो हैला केमि सॉल्व करियो बोले ना ये समटाइम्स स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो बिगर हां छोट छोट कथा रो बहुत बड़ कथा हे सेटा भी हैला कोन नै ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना तमे तुम सांगडू सुनलो सी तुमको ए कथाटा कहितला किंतु हम जानि ना तुम सांग कहिस नै सी अधा कहितला आ जने बडे चढ़े कहि देछि तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन ता से तुम कथा ही न तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन रो तुम जो माने ता प्रति जो चिंता थिला आउरी बढ़ी गला मुई कहली से जिंस से चुरेछि से कहला से जिंस से एइडू एइडा चुरेछि हैला कथाला आउरी बढ़ी गला किंतु से जिंसटा टिकेडा लैक ऑफ कम्युनिकेशन तम ए लुक आ ए लुक तम भितर कथा आइछि बाकी मझिरे दि तीन जन लोक आसी कहले तमडी से कथाटा बढ़ी तमडी आसिला जदि तुम ए लुक सहित कथा ही न जाइए कथा कौन लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जेहेतु लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कथा आउरी बढ़ी गला आउ सेटाको केमति सॉल्व करिवे से कहूछि हैला से लेखा है ग्रो बिगर ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल ए फ्रेंड वंस थॉट जेला कहले वंस थॉट आई इग्नोर देम बट एक्चुअली आई वाज बिजी हैला माने एग्जांपल नै है तुम फ्रेंड तुम संग से भाबला तुमको से इग्नोर करछि किंतु एक्चुअली से व्यस्त थिला सेदिन हाउ देखिनि आउ हैला we talked openly clarified the situation and problem was solved communication help to resolve जदि तुम तुम संग सहित से टाइम कथा ही पड़िबो मु व्यस्त थिली कि तुम से कथा ही बेलनी से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जिवो आ जदि कथा बेलनी से कथाटा से माने बढ़ी जिवो आ से तो कथा न को कथा भी से एटीट्यूड बढ़ी जिवो से मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ी जिवो ठीक अछि पिला माने तापर देखिया नेक्स्ट बार हम क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट बार क्वेश्चन अछि ले हम जोरा से डिस्कस लेट अस डिस्कस करेक्ट द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट हैला सेडी हम टेक्स्ट लिखाई सेडी हमर फर्स्ट स्टेटमेंट माने मिछ स्टेटमेंट कोन करिया करेक्ट करिया चला करेक्ट करिया फर्स्ट करिया द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द करेक्ट करिया सब हैला हे फर्स्ट स्टेटमेंट अछि एडी में करेक्ट कर लिखी छी हैला द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग शी ऑनेस्टली कमेंटेड ऑन द क्वालिटीज ऑफ हिज पोएम हैला हमर क्वीन जे किंग रो पोएट को दिए कोन इंसल्ट कर नथले अपमान कर नथले हे माने बहुत से ऑनेस्टली कोन ताकर पोएम डाको क्वालिटी को कमेंट करथले कहथले किछि सेकंड अब तेनालीराम डिड नॉट गो इमीडिएटली टू द किंग हैला संगे संगे इमीडिएटली आके पचारलेनी ही यूज्ड ए कवर प्लान टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक तेनालीराम से संगे संगे जाई किंग अनालिसिस कथा आनी से ओडे एमती सिचुएशन क्रिएट करले ओडे क्लेवर प्लान करले रेटा को रियलाइज करिवो सिदा माने भूल लागो पश्चाताप करियो बोली द कॉटेज डिड नॉट ट्रूली एडमायर द पोएम दे pretend to prize it please the king ये तो थर्ड टाको मैं ट्रूली कर फर्स्ट थिला ठीक अछि कॉर्नर डू ट्रूली एडमायर द पोएम चार नंबर ला ना द मिनिस्टर इन द कोर्ट वी आर नॉट एक्चुअली eager they were curious and confused about Tenali Rama's usually idea about paddy cultivation हैला से माने कोन ना कोर्टा ताको पई कोन ना दे कोन क्यूरियस थिले जानिया लागि थिले आ कंफ्यूज थिले कोन पई तेनाली रामकृष्ण जो गोटे प्लानिंग देखला कार ना पैडी कल्टीवेशन माने धान चाष पई ठीक अछि बिला ठीक कर लिखा अछि फर्स्ट स्टेटमेंट को द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक स्टॉप्ड बीइंग एंग्री एंड कंस्लाइड विथ द क्वीन तापरे कि हमरा रियलाइज करले कि तार मिस्टेक ताबे से क्वीन संग जाई अगर कथार्थ हेगिरे सब सॉल्व करले से कहू ठीक अछि तार देखिया नेक्स्ट कोन अछि बिले नेक्स्ट हमर अछि डबल आई सॉरी सिंगल आई फर्स्ट वीडियो इज हाउ डज क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीराम कैन हेल्प द किंग से कहला कोन पाए हमर जो रानी थिले से कोन पाए तेनालीराम विश्वास करले से जणा ही ताको सहाय्य कर पारे कोन पाए ना द क्वीन बिलीव्स बिकॉज़ तेनालीराम is wise clever and knows how to make king realize his mistake without hurting his pride ना क्वीन जानि थिले कि एई माने हमरो सामने जरे गोटे लोक अछि ताकू माने आघात माने कष्ट न देई केस को सॉल्व करबा रे के तेनालीराम सेथि सेटा को बिलीव करथिले से सॉल्व करला वाली सेथि पई ही यूजेस इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स माने के हम तेनालीराम कृष्ण से तार ह्यूमर्स और इंटेलिजेंस को यूज करी रे कोन प्रॉब्लम को सॉल्व करेबी सेथि से कोन काउ चूज करले तेनालीराम कृष्ण को ठीक अछि पिला माने पॉइंट ए पे दोस पिला माने टिके रो 2 सेकंड रो
What does the Queen statement suggest? कौन था स्टेटमेंट? ऑप्शन देजी ऑप्शन बी है उत्तर सी रिग्रेट्स द यूनाइटेड मिसअंडरस्टैंडिंग तापर से रिग्रेट करले दुख प्रकाश करले स्टेटमेंट में हला हो तापर देखिया पे कोन अछि ट्रिपल बिट ट्रिपल आई पिला अछि हाउ डज तेनालीरामा रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम हला देखिए चलो ना तेनालीरामा does not directly argue with the king तेनालीरामा से माने आर्गुमेंट कलेनी जुक्ति कलेनी किंग सहित instead he uses clever idea to make the king realize his mistake कौन this shows his intelligence patience and ability to solve problem tactfully जो प्रॉब्लम समस्या हेतला से जाईगिरी हमर राज्य सहित आर्गुमेंट जुक्ति कलेनी ताकर बुद्धि बल को यूज करिगिरी माने मन शक्ति को यूज करिगिरी से मिस्टेक को सॉल्व कले आ जोड़ा ताको सॉल्व कला ताकर धैर्य आ ताकर बुद्धि ताकर एबिलिटी को सॉल्व कला तापर बिले अछि हमर फिल इन द ब्लैंक्स अछि कोन अछि बिले ना चैनल रे फिल इन द ब्लैंक्स अछि करिया फिल इन द ब्लैंक्स चलो स्टेट अरे 3 नंबर बीट रे फिल इन द ब्लैंक्स थिना हो एटा तोर अछि सॉरी हला आईबी रे अछि फिल इन द ब्लैंक्स सेटा कर दा फास्ट सेटा फिल इन द ब्लैंक्स ना कोन नै फिल इन द ब्लैंक्स सब टेक ग्रेट प्राइड कोन भाई जो लिखाई जी टेक्स ग्रेट प्राइड आइड हम द किंग्स रिएक्शन शोज हिज सेंसिटिव एंड कोन ना टेक्स ग्रेट प्राइड जी आर ई ए टी ग्रेट प्राइड तापर जब 2 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर फर्स्ट बिट देखिया कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबल एक्सप्लेनेशन हला से जो देई छी तापे गोटा में सुटेबल एक्सप्लेनेशन देबा फर्स्ट रो चलो देबा when the king explanation हला when the king says I let my pride blind me he means that his ego stopped him from seeing the ताको ईगो माने ताको भितरे जो कोन ईगोडा अछि हला हेला कोन seeing the truth and made him react unfairly without thinking properly हला ता माने हला he means that his ego stopped him seeing the truth राग गोटे ता भितर थिला सेटा जो सत्यडा को देखिया लागि सत कथा तमे जदी अति से रागी गलो तम भितर ईगो अछि हला तमे जो सत्य जिंसा देखिबोनी आ माने तम भाबिबोनी बुझियो चेष्टा करिवोनी जेदा क्वीन रानी जो थिला कोन सेदा को ताकू मान ता भलो पाई कहितला से उल्टा आड़ नै गला से भाबिला मोर पोएट को से अपमान करूती ताबे से कथा आलनी एतुई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हला से लिखा आइछ बोले ना stopped him from seeing the truth and made him react unfairly without thinking properly तापरे कोन ताको तयारी कर देला एमती उडे मनिसो जोडा कि माने बिना हाबिगिरी से हाबला जिंसरा अनफेयर माने ठीक नाही बोली why does queen say this queen कोन में से कहला the queen says this because she want to forgive the king and restore peace queen कोन में कहले ना हमरो किंग को क्षमा कर देले ताकू कोन आगु थरे रेस्टोर पीस माने कोन आउ थरे से दरबार खुशी फेरी आसु साम्राज्य रे कोन हमर जो सब फेरी आसु परिवर्तन हे जाबा जिंति हस खुशी रहतले दरबार रे ठीक अछि बिले तापर आइला she does not want to continue the argument and he is ready to move forward चाहनथिला कर माने कोइन चाहनथिले कि आर्गुमेंट जुक्ति करया नै कि से पई से कोन ना आर्गुमेंट को फॉरवर्ड कर देले माने साइड कर देले तापर फिल इन द ब्लैंक्स देछि अब मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस ठीक अछि पिला माने तापर आईवी देछि वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वीन कोन ना फॉरगिवनेस माने जो दया हला सेटा हम काइंडनेस कह पारिया पेशेंस कह पारिया और अंडरस्टैंडिंग भी कह पारिया ठीक छै जाने तापर आईवी भी कर देल तमरो तापर हैला डबल आई रे फर्स्ट किन दे क्वेश्चन देछि व्हाई विजयनगर एम्पायर considered to be its golden era during कृष्ण देवराय रीजन कौन में गोल्डन एरा को होतला देखो पिलाने द विजयनगर एम्पायर वाज इट्स गोल्डन एरा बिकॉज़ इट वाज टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्ट्रांग एडमिरेशन कल्चर डेवलपमेंट एंड पीस आर्ट लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्लोरिश अंडर द रूल ऑफ कृष्ण देवराय कौन पाई से टाइम रे बढ़िया सब कल्चरल डेवलपमेंट होतला शांति रे थिला आज सब एजुकेशन भी होतला से टाइम रे चलफा बेली
कहुछि ठीक अछि पिला माने तापरे हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग कोर्ट केमती हम तेनाली रामकृष्ण स्पेशल प्लेस करथिले देखो तेनाली रामकृष्ण गेन स्पेशल प्लेस बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस विथ एबिलिटी सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्लेवरली कौन पे फेमस थिले बुद्धि बल पे से फेमस थिले कहिना डिफिकल्ट प्रॉब्लम को से गोटे चुटकी रे सह माने सॉल्व कर दोथिले हाउ ही एंटरटेन द कोर्ट एंड आल्सो गिव वाइज एडवाइस वेयर नीडेड आउ से माने कोर्ट को एंटरटेन करथिले आउ गोटे भलो एडवाइस दउथिले जेटा कि जेते हम कोर्ट को दरकार हुए ठीक अछि पिला माने हौ तुम सरी गला 2 नंबर क्वेश्चन तापर 3 नंबर क्वेश्चन अछि हाउ डिड क्वारेल बिटवीन किंग एंड क्वीन कौन भाई झगड़ा हेतला क्वारेल माने झगड़ा हला कौन भाई हेतला देखो द क्वारेल क्रिएटेड ए tense and unhappy atmosphere in palace the king remained angry the queen was upset and Kotter felt uncomfortable peace and memory were disturbed until Tenali Ramakrishna helped resolve the issue जो क्वारेल क्रिएटेड हेतला जो क्वारेल दा एटमॉस्फियर टाକୁ ପୁରା ଦୁଃଖିତ କରି ଦେଇଥିଲା ହେଲା ଆଉ କିଙ୍ଗ ପୁରା ରାଗରେ ଥିଲେ क्वीन रानी अपसेट दुखी करुଥିଲେ ଆଉ कोर्ट टा अनकंफर्टेबल थिला पिला माने ଆଉ ଯେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ହାରମୋନି ସେଗୁଡା କଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କଣ ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा ना कଣ व्हाट स्ट्रेटजी यूज देखो 4 नंबर बिले क्वेश्चन कौन अछि कौन स्ट्रेटजी यूज कला व्हाट स्ट्रेटजी सीजी हमरा व्हाट स्ट्रेटजी डिड तेनाली राम यूज मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक कौन सी स्ट्रेटजी यूज कला तेनाली रामकृष्ण को तार मिस्टेक को रियलाइज करिया लगी ना तेनाली राम यूज्ड a clever and indirect strategy he introduced the idea of special paddy seeds that would only grow in planted by someone who had never made a mistake ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କୋଉ ଥରେ ବୁଝିଥିଲେ ନା ଆମ ଯୋଉ ଧାନ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକୁ ରୁଇବା ସେ ଟାଇମ ରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ନା ଆଇडिଆ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କଣ ସ୍ପେଶାଲ paddy seeds to would only grow be planted by someone who had never made mistake जे mistake करनी से रुइबो बेले से कहतला how this made the king realize that everyone makes mistakes हैला से कोन कहला जे भी रुइबो बिना मिस्टेक रुइबो आ से जिंस रु राजा को पश्चाताप होला कि समस्ते कोन भूल करंती बेली आउ including himself माने ताको निज को निकली अरे what was the reaction of Kotter when Tenali Rama introduced his special paddy seeds हला हटर ना द Kotter सरप्राइज हेतला कंफ्यूज हेतला हला आश्चर्य हेतला क्यूरियस था जानबा लागि they did not fully understand his idea but were interested to see what he meant हला से माने ता आइडिया को बुझ पालेनी आके से जिंस इंटरेस्टिंग थिला बेली को आउची 6 नंबर देखो बिले 6 नंबर हम देची how does the story conclude and what lesson can be learned from it हला हेड conclude हला कोन सिखलो the story end with king realizing his mistake apologizing to queen and restoring peace one should not let pride action it is important accept mistake and valuable honesty ए स्टोरी कोन सिखले तमे निजर भूल को मानिबो जत्ते बड़ पदवी रे थिले तम भूल को मानिबो बोली कोहा होसी हला आवा को जीवो तापर देखिया लेट अस लर्न फर्स्ट रो जो मोर फिल इन द ब्लैंक्स अछि कोन देखिया फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स लिखा आइसी तार आंसर हबो कोन पिले न देखो जो जोडा ब्लैक करा आइसी ब्लैक रे सेल का आंसर ए हॉर्स फेल ओवर द रूम सेहि पर सेकंड कोन रिपेल्ड थ्रू थर्ड कोन स्टॉर्म्ड ऑफ हला देन देले पिला आने जो नंबर कोन ए सब अछि जो डैश कोन कहि देली तापर हम कोन देई जे हमर थर्ड पर एवरीवन डिसअपियर्ड जो देई कोन हबो ना ए मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम हला देखा दिला ने वीडियो पॉज कर लिखिबो तापर तुम देजी हमर 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स रो कोन ना माइंड रेसेट बैक आ 6 नंबर हला कास्ट ए शैडो ओवर तापर हला सेकंड स्टैंजा रो जो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट हला मर्मर तापर साइड तापर 3 नंबर विस्पर्ड हला विस्पर्ड ठीक है बुझाने कोन विस्पर्ड तापर 4 नंबर हला गास्ट तापर 5 नंबर स्निकर्स 6 नंबर हला थर्ड
ठीक अच्छे हाँ ये तुम डैश पूरण पिले वीडियो को पॉज कर तुम लिखिदेव तार तुम अच्छी आम पुणी डैश पूरण अच्छी कलम भी अच्छी 7 नंबर डैश पूरण हम कौन ग्राउंड 8 रहा रेटल रोड 10 रहा मरमट ठीक अच्छे पे बुझीला प्रॉपर्ली हो कलम भी लिखि दियो ए लिखि देछि भल देखो 1 रो सब किन कोन हबो 1 रो जी हबो हला विकेट तापरे से लिखा है जी मैच द कलम भी हला ए जी यू हैव ऑलरेडी लर्न सिखि जो तमे आउ compound words in form of two or more words combined make a new word with a distinct meaning here some words given column and comma ते मिसेकी ଗୋଟେ distinct meaning तयारी करियो कहूची मिसेलु तु 1 को विकेट रे मिसेलु जी रे मीनिंग कोन देला वीक विकेट हला ठीक अछि तमे कॉलम 1 कॉलम 2 मिसेकी गुटे वर्ड तयारी करबो सेही परी हमर सॉफ्ट टेम्परेट सॉफ्ट टेम्परेट हला कॉमन सेंस बुझेला पिले हाउस हाउस होल्ड हला तो तमर कोन तम कलम भी मिसाई रे तयारी कर हाइची वर्ड ठीक अछि पिला माने तमे वीडियो पॉज कर लिखि देबो तापर पुणी तमर अछि फिल इन द ब्लैंक्स पर तापर पुणी अछि कलम भी देखिया हो फिल इन द ब्लैंक्स फास्ट देखि दियो सी हला क्विक विकेट हबो सेकंड रो हाउस होल्ड हबो थर्ड हला इल टेंपरेचर 4 नंबर हला कॉमन सेंस 5 नंबर हला डांस हॉल 6 नंबर हला स्काई ब्लू 7 नंबर हला बुक स्टोर 8 नंबर हला सॉफ्ट स्पोकन हला तम कहि देली डैश पूर्ण तापरे आईवी अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस हला अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग कोन हबो ना पॉसिबल फॉर फ्यूचर कंडीशन हमरा एडा कोउति रे सेंटेंस ता तयारी करा है if plus present plus will plus verb मिसाई करा है हला दिस इज रियल एंड पॉसिबल इन द फ्यूचर हमर देखि जो एबिसो नुआ हो चेंज है जी लास्ट से टेंस दोची तो एटा भी टेंस रो स्ट्रक्चर केम थिला हम देखिले तापर 2 नंबर से कोन यूज है जी जो 1 नंबर सला 2 नंबर कोन है जी यूज है जी इफ समथिंग वेंट रॉन्ग फार्मर वुड सफर ए हमर इफ प्लस पास्ट टेंस यूज है जी प्लस वुड लागि छी प्लस verb लागि छी हला दिस इज नॉट रियल जस्ट इमेजिन 3 नंबर ता कोन ना इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन जे रिग्रेट करा वाला हला से कोन मिसी जी हमरा इफ लागि छी पास्ट परफेक्ट लागि छी वुड हैव लागि छी पास्ट पार्टिसिपल लागि छी एग्जांपल उडी नै छी आई हैड नोन आई वुड हैव ए चोजन अनदर हो तापरे बुझि सारलो तापरे एग्जाम पई मैं कोई ट्रिकी गोडे इनस देई छी प्रेजेंट विल पॉसिबल पास्ट वुड इमेजिनरी पास्ट परफेक्ट वुड हैव ए रिग्रेट हला एग्जाम पई भी तुम गोडे मन रखा पई देई छेडा तापर देखो कॉलम भी मैच कर दियो से देची नाउ मैच सबऑर्डिनेट कॉज कॉलम 1 अप्रो पीरियड मेन क्लॉजेस कॉलम 2 मेक कंप्लीट सेंटेंस इ तयारी करी ओटे कंप्लीट सेंटेंस तयारी करी बोली कहै छी देखो सब करा है छी एक रसी आई वुड गिव माय सेल्फ विंग्स हला इफ आई हैड ए मैजिक वॉन्ड आई वुड गिव माय सेल्फ विंग्स इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम्स तो समस्त सेंटेंस तयारी करा है कलम भी करी देखा होछ बिला तमे लिखि देबो तापर कंप्लीट द सेंटेंस हला सेंटेंस उधा आस्ते कंप्लीट करियो हला कोन हबो सेंटेंस कंप्लीट करले एटा कंप्लीट करले इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड लेफ्ट एरियल हला कंप्लीट सेंटेंस कर देली 2 नंबर तापर 3 नंबर थियो तापर 5 6 देखा होछ बिले लिखा है जी वी सॉरी you will feel tired माने कोन दुर्बल फील करजो if you continue to stay up late night if she knew the answer she would tell us she would have passed the exam if had studied harder if I had millions rupees I would help the poor and travel the world सेंटेंस कंप्लीट कर सला परे तापर पुना आउट अछि कंप्लीट सेंटेंस करो हैला तुम लिखि देज पिला ने हम देखिरी सेंटेंस कंप्लीट कर परियो हला if I were head teacher in my school I would introduce fun learning methods and reduce stress for student if I were a bird I would fly freely across the sky explore the new places दिन पके जाती तो मैं नुआ नुआ जगह बोलथाई दी स्काई रे 3 नंबर देछि कंप्लीट सेंटेंस करा है तमे देखि लिखि दो बिले हला ओला सेंटेंस अछि ताको कंप्लीट करा है ठीक अछि तापर तुम रहला लेट अस लिसन कोन लेट अस लिसन पिलाने
बुझी पारुछि तुम चैप्टर बड़ अछि क्वेश्चन आंसर भी बड़ अछि जे तुम बड़ अछि हैला द करेक्ट ऑप्शन है कौन द रफ ट्राइंग द बंडल ऑफ स्टिक कोन बोल बुझबो ताबे एरोगेंट हबो ताबे करेक्ट ऑर्डर रे ताको लिखा अछि हैला करेक्ट ऑर्डर लिखिबो लिखा अछि करेक्ट से लिखा अछि once again listen the story as you listen number of events in the story correct the order of occurrence करेक्ट ऑर्डर लिखा अछि पिलाने भल देखि दियो तुम देखि दोजी एला करेक्ट ऑर्डर ठीक अछि ताको वीडियो पॉज करी तुम देखि देबो करेक्ट ऑर्डर सला परे तमरो आ नाही लेट अस स्पीक रहला करेक्ट ऑर्डर एपटे अधार अछि आ एपटे अधार देखि दियो एपटे अधा अछि ए देखि दियो हैला 6 7 8 9 इनती करेक्ट ऑर्डर करा अछि ठीक अछि बुझला बिले आज थे तुम चैप्टर क्वेश्चन लेट अस स्पीक तुम करिया नै ना ए जे हम क्वेश्चन आंसर हम कर देली आ एडा तुम स्पीक करिवो पढियो हो एडी तुम चैप्टर सला फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर आओ जदि तुमको भल लागिछि तुम जदि होमवर्क दिया हैछि स्कूल रे क्वेश्चन आंसर करिया नै तो एडी चैनल ऑलवेज अवेलेबल रहे क्वेश्चन आंसर से सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखि थाओ ठीक है बिला ने आओ कोन तुम जो सांग मान को शेयर करो जो माने जानि नाहाती एई सार एमती पर नुआ नुआ बहिरे क्वेश्चन आंसर सहित पढिया छाडुछन्ती जदि चैप्टर तुम बुझिन तम ट्यूशन ने वीडियो रे अपलोड करिछि भल से तुम एठी भी ट्यूशन को बुझिन वीडियो रे देखि बुझी पारियो बुझी पुनी प्रश्न उत्तर तुम करि पारियो एई अछि देखा हबा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अध्याय रे जय जगन्नाथ।